हमारा डाइजेस्ट सिस्टम कौन सी ऊर्जा में आता है? विंड में आता है कि हीट में आता है, कि हॉटनेस में, ह्यूमिडिटी में, ड्राइनेस में, कि कोल्डनेस ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। में? किसमें आता है? ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी में। सर, ह्यूमिडिटी। वंडरफुल। सो नाउ we further divide the digestive system in the six energies. हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को फिर से 6 ऊर्जा में बांट दिया है, राइट? As per the classification of six systems, our we know the wind, heat and hotness, humidity, dryness and coolness. So the digestive system is coming under the humidity energy. Now we are going inside the digestive system and further dividing in the six energies. Wind, heat and hotness, humidity, dryness and coolness. So mouth and food pipe, right? Mouth and food pipe. Or we can tell oral cavity, हमारा मुख, oral cavity coming under the wind energy. Then stomach is coming under the heat energy. Duodenum is coming under the hotness energy. Then the remaining part of the small intestine, which is called jejunum plus ileum, is coming under the humidity energies. Large intestine is coming in the dryness energies, and rectum and anus is coming under the coolness energies, right? So for example, someone is suffering with a pain problem in the mouth. किसी को माउथ में प्रॉब्लम हो रही है, मे बी burning sensation in the mouth, the person is suffering some problem in the, maybe burning sensation in the mouth. So the step number one, because I want to do the treatment in the mouth, हमें माउथ के अंदर ट्रीटमेंट करना है. So the step number one will be selecting the digestive system. So I am selecting humidity. The step number two, now inside the digestive system, I want to work on the mouth. So selecting the wind. Now selecting the mouth or oral cavity. So the step number two, I am choosing wind.
Till now, we have not started the treatment. Till now, just we are choosing and choosing. So first we have selected humidity, means digestive system. Then in the digestive system, we are going one step more, that is wind. So we are putting this sign, this is called the sign of renting. So try to understand here once again. So we know this is the humidity meridian. We know this is the stomach meridian, which is called humidity meridian. In this meridian, we are having many points. And we are aware with the name, that is wind, heat, hotness, humidity, dryness, and coldness. We are aware with the name of these points, right? The direction of energies. In the yang channel, energy entering from the upper body in the yang channel, energy entering from the upper body and going in the lower body, entry and exit. So entry from finger and exit from toes. So entry from finger and exit from toes. So we can see the direction of energy lines. ये ऊर्जा की दिशा है, थंब में हमेशा ऊपर ही होती है. So we have selected the first humidity. Humidity means digestive system. Now inside the humidity, we are selecting the wind. So we will put methi seed here. हम मेथी का दाना यहाँ लगा देंगे. On the wind point, we will be putting methi seeds or star magnet. Methi or star magnet, or we will put perpendicular needle. या तो हम खड़ी निडल लगा देंगे. As soon as we press the wind point, as soon as we press the wind button, the wind meridian will open, and the central, this meridian is the wind meridian. Wind meridian will open. Because as soon as we are pressing the wind point, wind means oral cavity or the mouth, this meridian is going to open. So now this wind meridian is oral cavity or the mouth. Now we are going to do the treatment here. अब हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे. हमने क्या बोला था? The person is having burning sensation. जलन हो रही है उसे.
burning. Burning sensation is the hotness. Burning sensation को हम hotness कहते हैं. So we have to reduce the hotness. This is the treatment. हमें hotness को कम करना होगा. So we will apply the double grandmother law. Double grandmother law. Wind, heat, hotness, humidity, dryness, and coolness. So wood, fire, earth, matter, and water. Who is the grandmother of fire? Water is the grandmother. Grandmother one. We want to reduce the hotness. हम hotness को कम करना चाहते हैं. We'll do opposite action on the water. So we'll increase the water or increase the coldness. So we are increasing the water or increasing the coldness. और वैसे भी आपको पता है कि जलन कम करना है तो पानी तो बढ़ाना ही होगा. Now we'll go on the grandmother of the water. So earth is the grandmother of water. Whatever action we are doing on the water, will do opposite action on the earth. We want to tonify water, so we'll decrease the earth or the decreasing the humidity. So humidity, hotness, sedation, coldness, tonification, humidity, sedation. The main action will be the hotness, sedation, which we'll do in the controller and super controller, right? Okay. तो हमने देखा, अब हम ट्रीटमेंट करेंगे विंड मेरिडियन में. फर्स्ट हॉटनेस सेडेशन. तो सेडेशन के लिए पीला मैग्नेट लगाया जाता है. सो हॉटनेस सेडेशन, ये हमने सेडेट कर दिया, राइट. कोल्डनेस टोनिफिकेशन, उस पर सफेद मैग्नेट लगा दीजिए. और द व्हाइट ब्यूल मैग्नेट ऑन द कोल्डनेस पॉइंट. दिस इज द कोल्डनेस. इस पर आपने व्हाइट मैग्नेट लगा दिया. व्हाइट मीन्स टोनिफिकेशन. So we have done here tonification and we have done here sedation. Okay. अब humidity और बचा humidity sedation. So we'll put the yellow magnet on the humidity. Sedation. Now the main action was hotness sedation. So we'll do in the controller, you know, this is the controller which is triple Varro meridian. And this is the super controller. So this is the hotness point. This is also the hotness point. We'll set it and we'll set it. Treatment is over. So in this way, only with the help of 1, 2, 3, 4, 5, 6 point, we can work on these problems. If you want to use the color, this is the circle of double grandmother law. So suppose I want to work on that with the color. So remember one thing,
tonify with the same color and set it with the color of grandmother. It's so simple concept. अगर आपको टोनिफाई करना है तो उसका खुद का रंग लगा दीजिए, और अगर शेडिड करना है तो उसकी ग्रैंडमदर का रंग लगा दीजिए, तो काम बन जाएगा। राइट। फॉर एग्जाम्पल, if we talk about all the 6 energies, the self color of the wood is green, the self color of the heat is red, and the hotness is pink. The self color of earth element will be yellow. The self color of the metal will be brown, and water is black or dark blue. Remember dark blue because the light blue color is coming under the wood. अगर हम लाइट ब्लू कलर की बात करते हैं तो वो हमारा वुड में आता है। अब आप बताइए, चलिए बनाइए। टोनिफाई करना है तो खुद का रंग, और सेडेट करना है तो ग्रैंड मदर का रंग लगा दीजिए, और देखिए क्या होता है। राइट, डू दिस एंड टेल मी। ऐसा करके मुझे बताओ। आई एम वेटिंग। कहाँ कौन सा रंग लगेगा बताइए। डन। चलिए बताइएगा। फॉर रेंटिंग ग्रीन कलर, ग्रीन कलर इसलिए लेते हैं क्योंकि ग्रीन कलर को द कलर ऑफ न्यूट्रो एनर्जी माना जाता है। द पिंक एंड ऑरेंज बोथ आर फॉर हॉटनेस, whether the pink or the orange, both are in the hot. बनाकर चैट बॉक्स में डालिए। अगर न समझ में आए तो मैं बताऊंगा। सो डार्क ब्लू। सो how many person made by the color? How many person done? Anyone having confusion in the color? Having little bit confusion? Anyone? Okay, I will make. So what treatment was? First, we have selected the humidity, means a digest system. Then we went to the bind. This was the step number 1. Then in the bind, we have done the treatment hotness sedation, coldness tonification, and humidity sedation. And the main action was hotness sedation, so it became controller, right? So this is the treatment. ये हमारा ट्रीटमेंट था। अब इसे हम अप्लाई करेंगे, राइट? विल अप्लाई। So let's see here. Why color? In the humidity, we selected wind.
In the bin, we are doing hotness sedation, coldness tonification, humidity sedation, and controller will be hotness sedation. So just I am marking the point with some different color, maybe blue color, just to understand the location of the point. Okay. So the step number 1, humidity meridian bind ranting. So we know this is the humidity meridian. And we are having multiple points. We know multiple points. Bind heat hotness. So this is the bind point. We are putting green color because we want to rent it on the bind point. As soon as we are putting the green color, bind meridian will open, means the central meridian will open. That is bind meridian. Now what is the treatment? Hotness sedation, coldness tonification, humidity sedation. So we want to sedate the hotness. Heat and hotness. Wind, humidity, dryness and coolness. So the self color is the pink, we know that, or orange. Pink or orange. Now the color of the heat is red. The color of wind is the green. The color of the humidity is yellow. The color of the dryness will be brown. And color of coldness will be black or dark blue. So we want to set it the hotness. So we are putting the color of grandmother. What is the color of grandmother? Black. So we'll put the black color because we are already on the bind meridian. We are putting the black color here on the hotness part. So done. Now we are coming to the coldness. We want to tonify the coldness, so we'll putting the self color on the coldness. So the self color of the coldness is also the black. So this is, we are putting the self color of coldness. Now the third, humidity sedation. Again, we want to sedate the humidity. Let's come to the humidity. We want to sedate so that we'll using the color of grandmother. I already told you, if you want to sedate, use the color of grandmother, which is the green. अगर आप sedate करना चाहते हैं तो grandmother का कलर यूज करिए. तो हमने ग्रीन कलर लगा दिया. कहां पर? ह्यूमिडिटी पर. Humidity point will be here. Right? So this is the humidity sedation. Now finally, we are coming to the control. Controller means triple Barlow meridian. And the super controller on the thumb, this is the governing vessel meridian. We want to study the hotness, that is the controller and the super controller. The grandmother of the hotness is
black. So we'll put the black color here. And put the black color here. Hotness sedition and hotness sedition. Now instead of black color, we can always take the dark blue. हम black के बजाय dark blue भी ले सकते हैं. We can take the dark blue here. Dark blue at all the places where we have taken, we can take the dark blue. But remember one thing, we have to do that entire treatment in the sequence. हमें सारा ट्रीटमेंट सीक्वेंस में करना है. पहले रेंटिंग करना है, फिर ट्रीटमेंट करना है, और फिर कंट्रोलर लगाना. सीक्वेंस इज नेसेसरी. इज इट क्लियर और नॉट? अब कलर समझ में आ रहा है? ओके. So the self color do tonification and the grandmother color will do sedation. Clear? Fine. अब चलिए हम ओरल कैविटी के भी अंदर जाते हैं, बिकॉज ओरल कैविटी में तो बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं? दांत है, लिप्स है. लिप्स आर द पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी. Sometimes we see the cracked lips. Sometimes we the tooth pain. Sometimes we see the problem with the gums. Am I right? So different part having different problem. Some person is telling you, can you treat my teeth pain? कफ तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा, कफ डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं आएगा, राइट? ओके. चलिए अब ओरल कैविटी के अंदर जाते हैं. ओरल कैविटी or the mouth. So first we're talking about the bind means lips. Right? The heat means tongue. The hotness is coming upper palate. Upper palate. The humidity means oral diaphragm. I will explain this thing. Now coming to the dryness. Dryness means gums. Gums. And coldness means teeth. This is the classification of oral cavity. Got it? ये हमारे ओरल कैविटी का क्लासिफिकेशन है. लिप्स हम जानते हैं. We already know lips. We know the tongue. We already know gums. And we already know teeth. अपर पैलेट क्या होता है? अपर पैलेट का मतलब है ये ऊपर की छत. ये ऊपर की छत, रूफ.
Yeah, we'll discuss about the secretion, but syllab is humidity. You are right. Well, right now we are discussing this classification, right? Lips are the binder. Teeth are coldness. Gums are dryness. So now we can do individual treatment. I will discuss about the oral diaphragm. मैं उसके बारे में बात करूँ. अभी मेरा लक्ष्य है. अभी हम पहले दांतों की बात करेंगे. उसके बाद फिर सबसे पहले हम दांतों की बात करें या लिप्स की बात. राइट. So we want to do the treatment on the lips. There might be black lip, cracked lips, है ना. लिप में कोई प्रॉब्लम. There might be many problems in the lips. Right. And there might be many problems in the tongue. For understanding purpose, I will take some easy example. Let's do the treatment of tongue ulcer. Remember here tongue ulcer is the result of heat. So heat is high. What is the treatment? We have to set it the fire. We have to increase the water because water is the grandmother. So we are using double grandmother law. कि हमने फायर को कम करना है. तो हमने फायर को कम कर दिया और वाटर को बढ़ा दिया. We have decreased the fire, increasing the water. So this is a grandmother number one. Now humidity is controlling the water. This is the grandmother number two. We want to decrease the fire. So increasing the water because we are doing opposite action on the grandmother. तो जो भी एक्शन हम कर रहे हैं ग्राउंड मदर पर अपोजिट एक्शन करेंगे. अब हम वाटर को इंक्रीज कर रहे हैं तो ही अर्थ को कम कर देंगे. Sedating the earth means heat sedation, coldness tonification, and humidity sedation. The main action is heat, so heat will become controller and the super controller. So this will be the final treatment for the tongue ulcer. लेकिन जीभ पर पहले पहुंचना तो पड़ेगा. कैसे पहुंचेंगे? ट्रीटमेंट तो समझ में आया ना क्या करना है. ट्रीटमेंट तो क्लियर है ना कि क्या करना है और क्यों करना है. Why we are doing this, right? Now let's start the journey till the tongue. इसमें बस जर्नी सबसे मेन है. The main important is journey. We have to reach. और इस जर्नी का कोई अंत नहीं है. There is no end of the journey. We can reach till the cellular level.
बट वी आर नॉट गोइंग टू फार। पर समझ में नहीं आएगा कि हम बोले टंग में भी चले जाओ, डिवाइड द टंग इन मल्टीपल पार्ट्स, द मसल ऑफ द टंग, स्किन ऑफ द टंग, टेस्ट वर्ड ऑफ द टंग, वी कैन डिवाइड और नॉट? वी कैन डिवाइड ना? We can divide the teeth in many part, the outer part of the teeth and the inner part of the teeth. There is no end. But we have to stop somewhere. कि थोड़ा हम रुक जाते हैं क्योंकि इतना समझ में, जहां तक समझ जाए वहां रुक जाए, बस वही ट्रीटमेंट। So let's do the journey here till the tongue. Journey to the tongue. So step number 1, we are selecting the where we want to work. We want to work on the respiratory system? No. We want to work on the blood or circulatory system? No. Nervous system? No. Do you want to work on the skin or integumentary system? No. You want to work on the bone or osseous system? No. Do you want to work on digestive system? Yes. Yes. So selection of humidity, step number 1. This is the step number 1. Now step number 2. स्टेप नंबर 1 में हमने ह्यूमिडिटी का चयन कर लिया। स्टेप नंबर 2, now in the digestive system, again we are dividing the digestive system in multiple energies. So do you want to work on the mouth, oral cavity, or food pipe, or you don't want to work on the stomach? Do you want to work on the duodenum? Do you want to work on the jejunum and ileum? Do you want to work on the large intestine? Do you want to work on the rectum and anus? आप कहाँ वर्क करना चाहते हो? आपने कहा हम तो सिर्फ ओरल कैविटी में वर्क करना चाहते हैं, बिंड। स्टेप नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ बिंड। स्टिल वी हैव नॉट स्टार्टेड द ट्रीटमेंट। आप ओरल कैविटी में ट्रीटमेंट करना चाहते हो, ओके ओके, but we know our target is tongue. Our target is not the entire oral cavity. Of step number 3, oral cavity. We know wind, heat, hotness, humidity, dryness, and coldness. Okay. So now you want to work on the lips? No. हम लिप्स पर नहीं काम करना चाहते, नो प्रॉब्लम। Do you want to work on the tongue? Yes. We want to work on the tongue. Tongue is the heat.
Okay, do you want to work on the upper palate? No. हमें अपर पैलेट पर भी काम नहीं करना. ओरल डायफ्राम देखेंगे क्या होता है. डू यू वांट टू वर्क ऑन द गम्स? नो. मसूड़े तो ठीक है. यू वांट टू वर्क ऑन द टीथ? नो. विल डू द ट्रीटमेंट ऑफ द टीथ सेपरेटली. वी वांट टू वर्क ऑन द हीट टंग. हम हीट पर काम करना चाहते हैं. सो द सिलेक्शन ऑफ हीट. स्टिल वी हैव नॉट स्टार्टेड द ट्रीट. रिमेंबर, अभी तक हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया. अभी तो हम टंग पर पहुंचे हैं. नाउ वी रीच्ड ऑन द टंग. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3. करते करते हम टंग तक पहुंच गए. रीच्ड ऑन टंग. स्टेप नंबर 1, द सिलेक्शन ऑफ द ह्यूमिडिटी डाइजेस्टिव सिस्टम. स्टेप नंबर 2, माउथ मीन्स बिंड. स्टेप नंबर 3, हीट मीन्स टंग. पहुंच गए. तो इसे हम दिखाएंगे ऐसे. द फर्स्ट वी आर सिलेक्टिंग द ह्यूमिडिटी मेरिडियन and then we are putting the bind point. As soon as we put the bind point, bind meridian will open. Bind meridian will open. Now the bind, we will be putting the heat point. As soon as we put the heat point, heat meridian will open. Now we'll do the treatment. चलिए फिर से समझते हैं एक बार. So the number 1, we are selecting the digestive system. We know the humidity is the digestive system. Now in the digestive system, we are going to the mouth. So we are selecting the bind point. We know out of 6 points, we know wind, heat, hotness, humidity, dryness, coldness. तो हमारी एक परपेंडिकुलर निडल हमने बिंड पर लगा दी. रेंटिंग. सो इन द ह्यूमिडिटी वी आर पुटिंग द बिंड पॉइंट. देन बिंड मेरिडियन विल ओपन. तो ये हमारा अगला बिंड मेरिडियन ओपन हो गया. सो वी हैव रिटन द बिंड नाउ. बिंड का मतलब है ओरल कैविटी. वी वांट टू गो टू द टंग. तो हमने बिंड में हीट का पॉइंट लगा दिया. वी नो दिस द हीट पॉइंट. वी आर पुटिंग परपेंडिकुलर निडल. रेंटिंग. हीट का पॉइंट. As soon as we are putting the heat point, now we reach to the tongue, heat meridian will open. So this is the heat meridian. ये heat meridian है. Now we are going to do the treatment. What is the treatment of tongue ulcer? हमने पहले ट्रीटमेंट बना लिया था इधर. The treatment of tongue ulcer. फायर घटाना है. अर्थ वाटर बढ़ाना है. अर्थ घटाना है. हीट सेडेशन, कोल्डनेस टोनिफिकेशन, ह्यूमिडिटी सेडेशन. Heat sedation, coldness tonification, humidity sedation.
and the controller will be heat, and the supercontroller will be heat. Controller and supercontroller will be heat. So heat sedition. Okay, let's do. Now it's our choice. We want to do with the needles or the magnet. So the direction of the energy is like this. So want to study the heat. Now we are going to enter do the treatment in the heat meridian. हमें heat meridian में treatment करना है. And we know the point: bend, heat, hotness, humidity, dryness, coldness, sedition of the heat. So we are putting the needle in the opposite direction. Now tonification of the coldness. We are putting the needle in the same direction. Sedition of the humidity. We are putting the needle in the opposite direction. Humidity का sedition. जो भी ऊर्जा उसके विपरीत दिशा में needle लगाएंगे तो sedition हो जाएगा. Done. The control will be heat. So we are doing needle in the opposite direction for the controller and even for the supercontroller, because here energy is moving upward. So this is the treatment. अगर हम कलर से करना चाहें तो भी समझ लेते हैं. पहले आप ये नोट कर लीजिए. ओके. Step number 1, humidity, selection of the humidity and putting the bend point. So this is the humidity meridian, and we know the 6 point here, bend, heat and hotness, humidity, dryness and coolness. So the first we are putting the bend point, green color on the bend. Now the bend meridian will open, the bend meridian will be the center. So the step number 1 was in the humidity we are selecting the bend. Now in the bend we are selecting, in the humidity we are selecting the bend. It means in the digestive system we are selecting the mouth. Now mouth will open. In the mouth we are selecting the heat, means tongue. So in the bend meridian, now we are selecting the heat. So we are putting the green color again on the heat. The heat meridian will open. What is the meaning of heat here? Heat meridian means this. What is the treatment now? Heat sedation, coldness tonification, humidity sedation. So if you want to sedate the heat, you have to use the grandmother color, which is black, or the dark blue. So let me use the dark blue color. I'm sedating the heat because we know there's a heat part. Sedating the heat. Heat sedation. The tonification of the coldness.
So just putting the dark blue color on the coldness point. Then sedition of the humidity. We know the humidity is here. The grandmother color will be green. The color of wind will be green, which is the grandmother. So wind is sedition. So humidity sedition. Humidity will be at the joint here. So this is the humidity sedition. Treatment is over. Treatment हो गया. हमारा कंट्रोलर था हीट. So we are setting the heat in the controller, and we are setting the heat in the super control with a dark blue color. तो अगेन आई विल टेल यू, अगर आपको टर्न करना है तो सेल्फ कलर लगाइए, और अगर आपको सेडेट करना है तो ग्राउंड मदर का कलर. डन. आई थिंक little clarity is there. Tomorrow we'll discuss more about the oral cavity. Tomorrow means Monday. मंडे को हम ओरल कैविटी के बारे में समझेंगे. On the wind meridian, heat renting green color. Yes. Yeah, right. Yeah. इसमें ये मिस हो गया, ये लिख लीजिए. राइट. First we have selected the humidity and put the wind meridian point. Then in the wind meridian, we are selecting the heat with a green color. हमने विंड मेरिडियन में पहले हमने क्या किया कि सर्वप्रथम हमने ह्यूमिडिटी में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में विंड पॉइंट लगाया, तो माउथ ओपन हो गया. तो हम ये माउथ में आ गए. विंड मेरिडियन मींस माउथ. फिर हमने इसमें हीट का पॉइंट लगाया, तो टंग ओपन हो गई. माउथ के अंदर हीट, टंग मींस हीट. तो ग्रीन कलर लगा, तो फिर हम हीट मेरिडियन में आ गए और हमने सारा ट्रीटमेंट किया, यानी टंग के ऊपर ट्रीटमेंट किया. यस करिष्ठा जी. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर विंड मेरिडियन में रेस्पिरेटरी सिस्टम हम क्यों लेते हैं, मींस मेटल में क्यों नहीं लेते? और जब मेरिडियन उंगली पर लेते हैं तो विंड मेरिडियन हम लीवर और गॉल ब्लैडर पर लेते हैं. अभी वो बात बाद में, मैंने बोला ना, विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. ओके सर. वो सब समझ में आ जाएगा. ओके सर, थैंक यू. ये लेना, यांग लेना है. जनरली हॉलो ट्रीटमेंट करते हैं ना, द ट्रीटमेंट ऑफ द हॉलो पार्ट वी चूज यांग मेरिडियन. जनरली ट्रीटमेंट ऑफ हॉलो पार्ट लाइक द माउथ, like the stomach, like the large intestine. We take, but we understand the concept slowly. Yes, Satish ji. हाँ सर, ये मुझे कंफ्यूजन आ रहा है कि ये विंड मेरिडियन में हमने जो हीट को चुना है तो उसमें कलर हमने हाँ. ग्रीन लगा दिया, तो उसमें हीट का कलर क्यों नहीं लगाएंगे सर, रेड? क्योंकि हमने विंड मेरिडियन में अभी हमने ट्रीटमेंट नहीं किया है. सेल्फ कलर लगाएंगे तो 25 हो जाएगा. लेकिन तो हम अगर ह्यूमिडिटी मेरिडियन में देखें तो उसमें रेंटिंग के लिए हमने विंड को ग्रीन कलर लिया है. तो भी एक्चुअली तो अभी क्या है ना कि वो क्या रहा है ना कि जब भी हम अभी रेंटिंग के लिए हमारे पास एक ही कलर है, वो है ग्रीन. वाई? क्योंकि क्या होता है कि जनरली 3 कलर मुख्य माने जाते हैं. एक होता है रेड कलर. रेड कलर इज द कलर ऑफ फायर. जी. एक होता है ब्लैक कलर, और द डार्क ब्लू कलर इज द कलर ऑफ वाटर. जी. और एक होता है ग्रीन कलर. ग्रीन कलर होता है न्यूट्रल कलर मानते हैं उसको, द कलर ऑफ न्यूट्रल माना जाता है.
अच्छा अच्छा तो अच्छा। अभी अभी हमारे पास जितने भी कलर्स हैं उसमें एक जी न्यूट्रल कलर है जिसका जो है हमारा ग्रीन, राइट? जी जी दैट्स वाई एक्चुअली उससे भी ज्यादा न्यूट्रल अभी हमारे पास कोई कलर नहीं। ये बात सच है कि कभी लगेगा यार ग्रीन से तो हमारा वुड एलिमेंट हमारा टोनिफाई हो सकता है, लेकिन जी जी। यहाँ पर जब हम ट्राई ओरिजिन की बात करते हैं तो ट्राई हम्म, ओरिजिन जानते हैं ना कि जी हेट्रो जी लाल, जी वो यानी काला, जी और न्यूट्रो मतलब ग्रीन। जी। तो ग्रीन कलर को हम न्यूट्रो के हिसाब से ले रहे हैं, और यहाँ पर हमारा कॉन्शियसनेस भी काम करता है। यानी हम जो थॉट देते हैं कि यार हाँ हम इस पॉइंट को रेंटिंग कर रहे हैं तो वो रेंटिंग होती है, राइट? रेंटिंग में एक दूसरी व्यवस्था ये भी है कि रेंटिंग में हम सिर्फ उस पॉइंट को टच करके भी आगे जा सकते हैं। जस्ट वी अच्छा। टच द पॉइंट एंड जी। गिव द सजेशन एंड विल प्रोसीड, मतलब बिना कलर लगा के भी आप आगे बढ़ सकते हैं सर सर रेंटिंग। हाँ, सर मैं ट्रीटमेंट काफी काफी अच्छा ट्रीटमेंट इसका है। ये जो हाँ आपने बताया ये बहुत बहुत हमने इससे फायदे उठाए जी, और काफी लोगों को तुरंत का तुरंत ठीक किया। लेकिन एक वंडरफुल। चीज समझ में आता है कि जो निडल नहीं लगवाना चाहते, मतलब उनको दर्द होता है, वो कराते हैं। तो हम जैसे कलर का तो काम कर लेंगे, लेकिन रेंटिंग के लिए जैसे आपने बताया था कि हमने मेथी सीड लगा लेंगे रेंटिंग के लिए, और उसके बाद फिर टोन सेट करना है तो वो कलर के हिसाब से कर लेंगे। तो मेथी सीड के जगह पे अगर बकारिया सीड जो हम यूज करें उसमें, तो वो काम करता है। मैंने कई पेशेंट को किया है उससे, तो उससे उसका काम तो हो गया, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था कि नहीं बकारिया नहीं, कर सीड सकते से हैं, भी काम। बैक्टीरिया शीट इज ऑल्सो न्यूट्रल। और एक चीज मैं जी आपको और भी बताऊं आपको कि जी आपने मेथी शीट लगाया किसी पॉइंट पर, राइट? जी 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 तो उस पॉइंट की रेंटिंग हो जाएगी, जी और आगे चलकर जब आप उसी पॉइंट को टोनिफाई करना चाहते हैं, जी उसी पॉइंट को, जी जी और तो आपने मान लो उस पर बियोल मैग्नेट लगाया है ना, जी। तो अब पॉइंट पर ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही पॉइंट पर अपन मेथी सीट लगा देंगे और उसी के ऊपर से बियोल मैग्नेट लगा देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना। नहीं 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 होगा, नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले पूरा ट्रीटमेंट बना लेते हैं, और अगर हमें जी। लग रहा है कि यहाँ पर हम मेथी सीट लगा रहे हैं लेकिन हम्म, आगे चलकर इसी पॉइंट पर हमें ब्यूल मैग्नेट लगाना है, तो हम डायरेक्ट ब्यूल मैग्नेट ही लगा देते हैं। टोनिफाई से भी अच्छा तो जो भी सजेशन होता है जी बाद में जी तो पहले ही कर तो देते सर, हैं। तो सब फिर रेंटिंग छोड़ देते हैं और डायरेक्ट उस रेंटिंग पर ट्रीटमेंट। पहली बार इसे हम रेंटिंग ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा। फिर आगे चल के जब उसका टर्न आता है तो हम इस पॉइंट को एक बार और टच करके आगे निकल जाए। फॉर अच्छा एग्जाम्पल अच्छा। आई विल टेल यू, सपोज हाँ। जैसे कोई मेरिडियन है, जैसे हमने ह्यूमिडिटी मेरिडियन में एक बिंड का पॉइंट पर रेंटिंग किया, जी जी तो हमने मेथी का सीड लगाया। जी अब बाद में घूम फिर के वापस यही पॉइंट वापस आ गया जी टोनिफिकेशन करने के लिए। अब मेथी का हाँ सीड इसे लगा पड़ा है, अब जी टोनिफाई जी करें तो करें कैसे? हाँ तो या तो ऑप्शन है कि मेथी सीड हटाओ और बियोल मैग्नेट लगाओ, ये हाँ ऑप्शन है। हाँ हाँ लेकिन एक ऑप्शन ये भी होता है कि शुरुआत में ही इसे जो भी सजेशन आ रहा है भी वो कर दो, टोनिफिकेशन हाँ सेटिंग, हाँ और अब की बार बस टच करो आगे निकल जाओ। इसको हम समझेंगे, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ वो हाँ। जब इस चीज का टर्न आएगा तो समझ जाएंगे, लेकिन अच्छा अच्छा सभी सर। समझ में होंगे क्योंकि वो जी ट्रीटमेंट। जी जी जी। एक एक चीज और सर, कि हम इसमें बकारिया सीड भी लगाएंगे तो रेंटिंग होगा ना सर? हो जाएगा पक्का हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक सर, ठीक। थैंक यू सर। ओके, हम रेंटिंग के लिए स्टार मैग्नेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, यस राइट। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ओके ओके सर। हाँ आपकी बात सच है, मदर भी टोनिफाई करती है। ये कंसेप्ट भी मैं बताने वाला हूँ आगे चल के, लेकिन एक एक करके बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, स्टेप बाय स्टेप। यार से यू आर राइट, जब हम किसी भी पॉइंट को टोनिफाई करना चाहते हैं हम सेल्फ कलर भी ले सकते हैं और उसका मदर कलर भी ले सकते हैं, दोनों से ही टोनिफिकेशन होता है, राइट? सो एब्सोल्युटली राइट नीलम जी। ओके So ओके। it will depend again on the symptoms, whether the mother symptoms are more or less, or the are more, or the grandmother symptoms are more. So then it will become specific. For example, suppose we want to tonify the spleen, right? Spleen. So we can put the spleen is the humidity. So we can put the yellow color, or even we can put the red color. But if we put the mother color, and it will be also doing very fast tonification. Both are good.
एंड यू आर ऑल्सो राइट कि कभी कभी क्या रहता है कि हम किसी चीज को टर्निफाई करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास ऊर्जा नहीं है तो मदर से मांग लेते हैं, राइट? वी आस्क फ्रॉम द मदर. वी कैन डू बोथ. We can do any one thing, any one concept. Either we put the, if we want to do the tonification, we can put the self color or we can put the mother color. It's our own choice. लेकिन हाँ, इसमें अगर आप बहुत गहराई से जाना चाहें तो आप थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस यूज कर सकते हैं. अदरवाइज यूज द सेल्फ कलर और द मदर कलर, बोथ विल डू टोनिफिकेशन. राइट? ओके, चलो. तो आगे चल के अब हम अगली क्लास मंडे को करेंगे. मंडे और हम ओरल कैविटी के बारे में और डिस्कस करेंगे. तो पहले पूरा डाइजेस्ट ट्रैक्ट खत्म किया जाएगा, उसके बाद हम अगले सिस्टम की ओर मूव करेंगे. राइट? थैंक यू सो मच. लेट्स क्लोज द सेशन.